Hello students, welcome to Physics Parsana. Today we will study on chapter 3, that is motion in straight line. Motion in straight line. In motion in straight line, we will be studying two types of motion. One is motion having only magnitude, motion having magnitude with direction. Correct. The motions with only magnitude will be taken scalar motion, whereas sun with magnitude and direction, these are vector motions. Then now again motion can be categorized into two types. If motion is parallel to ground, it will be termed as horizontal motion, and if motion is perpendicular to ground, it will be termed as vertical motion. This type motion is motion by bus, car, train, that is, etc. This is the motion by while you are throwing an object, a stone, perpendicular to ground. If an object is thrown, upward, this is motion under gravity. Correct. Now, under this horizontal motion, if motion is along a straight road, if road is a straight road, then this motion is motion in straight line. If motion is on a circular road, this is circular motion. Then, if the road is not straight or circular, it is some of curved type, then it is curvilinear motion. Curvilinear motion. In all these three types, complete body is moved, hence these three is termed as translatory motion. Translatory motion. The motion in which complete body of the object is shifted. If partially shifted and some part is rotating about an axis, like a ceiling fan, if its rod is fixed and its blade is only rotating. If we see tips of the blade, we will observe like it is moving in a circular path. That here we say it is one type of
rotational motion. Correct. Now, we can say the motions are of two types. One is translational motion and other is non-translatory. That means some part is moved and other part is fixed at that position. Translatory motion is in which complete body of the object is shifted from one position of place to another. In this translatory motion, the object is moving parallel to ground, it is horizontal motion, and if the object is moving in straight road, we can say motion in straight line or rectilinear motion. Correct? Or it is one-dimensional motion. Whereas if objects will move in a circular path or chord path, that in that case we will say motion in circular road or circular motion, and this is a two-dimensional motion in which x-axis and y-axis both will vary in during motion. Whereas in motion in straight line, only one dimension will vary. That's it is told as one-dimensional motion. Next is in vertical motion, if object is thrown perpendicular to ground, then it is motion under gravity or one-dimensional motion. If object is thrown oblique to ground, that means at angle. At each step of its motion, both x-axis and both of its x value and y value will change. Hence, it is one type of two-dimensional motion. This is termed as projectile motion, and this projectile motion can be of two types. One is your oblique projectile motion, and another is your horizontal projectile motion. Correct. Now, let us see what is motion. Motion is if an object is changing its position with time. Motion is if an object is changing its position with time, then we say the object is in motion. For example, if an object is at certain time t is equal to t1, object was here and it was lying on top of a building near a tree. These are building and this tree are stationary or not moving, and this object is also at this location near the tree. After certain time t is equal to t2, we found this object has moved to another location. If somebody is standing here in front of the tree,
This person also stationary and see this object. He said this object is not moving. It was earlier, it was at rest. When he saw at T1, this found object started moving. Then at T is equal to T2, this object has reached some new position and crossed certain new distance, crossed certain path length or distance. He says earlier led position was A and the final reached at position B. Here in this case, this position A seen by this stationary boy or the boy standing in front of the tree. Here the object, the distance from this boy to this object, it was fixed. Now he kept on observing, found object is going away from the boy. Hence he found the position of the object had changed. Position of the object has changed. Now to feel whether position of the object is changed or not, this boy, stationary boy, has reference. He will see if the object is moving away or it is coming nearer to him. He will feel. In that case, he will say position of that object is changing. To know whether position of an object changing or not, either object will go away from the reference point. Here is the reference point, stationary boy standing in front of a stationary tree or building. Object will go away from the reference point, or object will come nearer to the reference point. These are two ways to find the position of the object is changing. If our object is changing its position, we will say it is in motion. That means object is changing position with time. That means if object is changing its position with change in time. Suppose at 10 o'clock, object was here, after 5 seconds it was again here, it is after 10 seconds again it is here. That means object is not changing its position, then we can say object is at rest. That means if the object is not changing its position with time, we say that the object is at rest. Object is at rest. Now, we came to know what is position. Position is the location of the object. Location of the object with respect to a reference point. Suppose that boy is seeing this bus and that bus is moving away from him, and after a certain time he found object has reached at
location B, that's some far away from him. Instead of he's outside the bus, if he's sitting inside the bus, what will happen? He will find always this driver is inside, he is sitting along with him, and he will feel that driver is, or for him, driver is not moving. That means with reference to him, the motion of the driver is zero, or position changed by the driver from him is always zero, as position from a driver is always same. Now, when he is standing outside, he see buses going away from him. In that case, he says, yes, bus is changing position. That means कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करेगा with time or with change in time, then we will say object is in motion. सेम ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जब टाइम चेंज होते रहेगा, तो इन दैट केस वी विल से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट का अपना लोकेशन विथ रेफरेंस टू सम रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट, सपोज एक लड़का अपने घर के सामने पेड़ के सामने खड़ा है और एक बस भी वहीं खड़ा है, और जब भी आगे देख रहा है 10 मिनट 20 मिनट का बस वहीं है, तो वो बोलेगा कि बस रेस्ट में है. उसके बाद क्या है, बस चलने लगा तो आप खड़ा कर देख रहे बस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और अपने उससे दूरी दूरी जाते रह रहा है, तो वो देखा कि बस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उस केस में वो बोलेगा कि बस मोशन पे है. लेकिन जो आदमी बस के अंदर बैठा है, वो जब ड्राइवर को देखेगा वो फील करेगा ये ड्राइवर तो कहीं नहीं जा रहा है, ड्राइवर वहीं बैठा है, ठीक है. बट जो बाहर में है वो देखेगा कि ड्राइवर भी मूव कर रहा है बस के साथ. करेक्ट. इन दैट केस वी सी that if object is changing its position, we feel it is in motion. Correct. Now, study of now we can say in physics we'll study nature and natural phenomena or events. This is a branch of science. Physics is a branch of science in which we will study natural phenomena. Physics has different branches. One branch is your mechanics, in which we will study motion of objects. If when we study objects at rest, we say this is the branch of mechanics in which we will study objects at rest. We will say that is statics. And if we study objects in motion, we can say it is either kinematics or it is dynamics. Correct. Study of objects at rest is statics. Objects of motion is either kinematics or dynamics. Kinematics is in which the cause of motion or the force or
which is causing the motion, we are not included in our study. Correct? The cause of motion or force is not included in study or calculation. That part is the kinematics. When you will include the cause of force, in that case, cause is included. We say it is dynamics. Okay. Now, part of mechanics that will deal with motion, objects in motion, we say now kinematics. Kinematics. Here, objects can be suppose object depend the road के ऊपर motion of object is on a straight road. If the road is a straight road, then motion will be motion in straight line, or other name of motion in straight line is rectilinear motion. Rectilinear motion. If road is of circular type, then motion will be this will be circular motion. Circular motion. जैसे रोड होगा हमारा मोशन भी नेम भी वैसे रहेगा. रोड स्ट्रेट है तो इट विल बी मोशन इन स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट रोड. उसका नाम क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन. If motion is on circular road, then this motion is circular motion. If the road is not straight or circular, it is little curved road. Curved road motion will be curvilinear motion. Curvilinear motion. In all these three, complete body of the object is shifted. Suppose the bus which was moving in certain direction on a straight road, earlier it was at position A, after certain time it has reached at position B. Then here complete body of the bus has shifted. That's why it is termed as, all these three cases, it is termed as translatory motion. It is termed as translatory motion. If once the road will be little bit curved, we'll follow that curved road. If the road somewhere else, that road is completely circular type, we follow that circular path, and from here to here, motion will be circular. Okay. Now, these are the cases where object is moving on the road, or it is horizontal motion. It is horizontal motion. If object is thrown vertical to ground, or it is thrown upward, or it is now coming downward, this vertical motion is termed as motion under gravity. Whereas horizontal motion, object is moving parallel to ground.
Okay. Now let us discuss on horizontal motion. In that we'll study motion in straight line. Road is straight. In straight line motion, one axis is used to describe the motion because only one coordinates will, suppose this start point is horizon 0 and this x axis taken, here x is 0. After certain time t1, object has reached at x1 distance from reference point. After certain time t2, object has reached at a distance of x2 from for this position name A 0. This is A, this is B. After T2 it has reached B, that is x2. Away from the origin. Now here the value of x is x1, here the value of at this point B, value of x is x2. This x coordinate has changed from its value at x1 is x1 to its value at B, which is x2. That means in motion in straight line, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन और ऑन ए स्ट्रेट रोड. उस केस में at the beginning, starting में x value was 0, that means when t was 0. कुछ टाइम के बाद t1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट A में पहुंचा है, t2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट B में पहुंचा है और ये जो पोजीशन है ये 0 से x1 दूरी पे है और वैल्यू ऑफ x इज x1 है. At B, value of x is x2 here. Now x coordinate has changed from x1 to x2. Here, always one dimension is changing. That's why it is known as one-dimensional motion. Next is if any object is moving and in that case, suppose हम इसका केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि कितना दूरी जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट और जो टर्म यूज करेंगे टर्म has only magnitude, has only magnitude, no direction. डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हुआ है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? दैट टर्म इज ए स्केलर क्वांटिटी. Scalar quantity. Already explained what is physical quantity. All those physical quantities having only magnitude and no direction is a scalar quantity. Whereas all physical quantities or terms having magnitude as well as डायरेक्शन. जैसे बोला गया कि कोई घर से निकला, दाहिने तरफ जाएगा तो हॉस्पिटल है, बाएं तरफ जाएगा तो रेलवे स्टेशन. A, B, C जाना है रेलवे स्टेशन और उसको बोला गया रेलवे स्टेशन आएगा 3 किलोमीटर दूरी पे और हॉस्पिटल आएगा भी 3 किलोमीटर दूरी. तो डायरेक्शन नहीं पता है तो वो जाना था रेलवे स्टेशन, इधर चला जाएगा तो वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा और उसको ट्रेन में छूट भी सकता है.
तो उसको रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा घर से निकलो और गो इन वेस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। तो ना तो ये दूरी जो कवर किया था, डिस्टेंस कवर किया था, पहले केस में वो क्या क्या गलत चला गया, तो उसको डायरेक्शन पता ही नहीं था, तो उस केस में वो स्केलर था। तो हम लोग कैसे जब बोलेंगे ओनली पाथ कुछ कवर कर रहा है, करेक्ट, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज स्केलर। Whereas in second case, जब हमने बता दिया कि 3 किलोमीटर जाओ लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में जाओ और वेस्ट डायरेक्शन से जाओ, घर के सामने से जो रोड है एक राइट पे जा रहा है एक लेफ्ट में जाओ और गोइंग वेस्ट, तो इन दैट केस हमने क्या किया, उसको डिस्टेंस भी बताया और डायरेक्शन भी बताया, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, देन हमने इसको जो बोला वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इन दैट केस वी से डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जिसका हमने मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं स्केलर है, और जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन और टर्म्स इन आवर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। One is distance and speed. Here distance and speed has only magnitude, no direction, hence it is scalar quantity. Whereas displacement, velocity and acceleration, all these have magnitude plus direction. So these terms, the quantities are termed as vector quantities. These are scalar quantities. Correct? Now, let us find out what is displacement, what is distance. Correct? अभी हम लोग क्या पढ़े थे, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इधर एक बिल्डिंग था, इधर एक ट्री था, बिल्डिंग भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ट्री भी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक बस खड़ा था, बस स्टैंडिंग किया, और जब बस ने मूव करना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद देखे कि बस जाके और कहीं पहुंचा है, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर था वो देख रहा था एक बस खड़ा है और बस चलने लगा है, अपना अपना पैसेंजर को सब बैठा कर ले आया है, तो बस आगे यहाँ पहुंच गया। Suppose it was a position A in front of tree or in front of house, it has reached now position B। इसी दौरान इसने कुछ दूरी कवर किया है, that is the distance. Now, so it is point A, this is point B. He has the option or a straight road, suppose is one road of one, उसने जो भी दूरी गया suppose 10 किलोमीटर्स, किस दूसरा एक दोस्त है, वो 3 दोस्त हैं, 3 रास्ता है, दूसरा रोड दोस्त ने दूसरा रोड फॉलो किया और ये है 12 किलोमीटर, और तीसरा रोड दोस्त है जो तीसरा रोड कवर करके गया
यह है 20 किलोमीटर। करेक्ट। तो ए से बी जाने के लिए 3 रास्ता है। एक रास्ता है स्ट्रेट 10 किलोमीटर, दूसरा है 12 किलोमीटर, and third is 20 किलोमीटर। दैट मीन्स जो बॉय वन है, बॉय वन फॉलो किया रूट 1, बॉय टू फॉलो किया रूट 2, बॉय थ्री फॉलो द रूट 3। करेक्ट। इन ऑल दोज केसेस they have crossed certain path and traveled certain path and reached B। तो जो पाथ लेंथ है तीनों के लिए अलग अलग है। जो बॉय वन है तो दिस इज द रोड नंबर। रोड 1 क्रॉस करके गया, कितने पाथ कवर किया? पाथ लेंथ इज 10 किलोमीटर पर एंड रोड 2 जो कवर किया है yes covered 12 kilometers, whereas road 3 जो कवर किया है उसने कवर किया है 20 kilometers। In all those cases distance क्या है? इसके लिए भी 10 किलोमीटर, इनका 12 किलोमीटर और इनका 20 किलोमीटर। तो now you can to know what is distance। तो distance is the actual path distance is actual path covered or traveled by the object। तो ऑब्जेक्ट लिखा, कोई आदमी हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जो भी अपना पोजीशन चेंज किया, यहाँ से यहाँ तक नए पोजीशन में पहुंचा, कुछ दूरी कवर किया। करेक्ट। कोई बाइक में गया है 10 किलोमीटर कवर किया, उसका जो भी फ्यूल कंज्यूम हुआ, इधर भी गया 12 किलोमीटर, उसका भी कुछ कंज्यूम हुआ फ्यूल, इधर भी जो 20 किलोमीटर गया उसका भी कंज्यूम हुआ। इन ऑल केसेस distance is actual path traveled by the object। Now, what is displacement? Displacement is the shortest distance. This first is distance in a particular direction. This is our displacement। Displacement is distance in a particular direction। Correct। Displacement is distance in a particular direction। That is, we say is initial position, this is final position। ये start position है, end position है। This final position minus initial position और shortest distance। This is shortest distance from A to B। A से निकल के B तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिकॉज इन डे मेंशन A से निकला B तरफ गया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। यही केवल दिस इज रोड वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। करेक्ट। दिस इज ए डिस्टेंस और सेम वे इट इज ए डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट बन गया 10 किलोमीटर। फॉर बॉय 2 जो रोड 2 देके गया उसके लिए डिस्टेंस 12 हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो वही है, तो ये डिपेंड करता है ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नॉट कैसे घूम के कोई गया। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट अगेन 10 किलोमीटर और फॉर बॉय 3 आल्सो डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर। This displacement is fixed from position to another position, or that is between two positions। Now,
Another case is there. Suppose somebody has moved, another friend has gone and has not stopped here. उसने क्या किया? वो घूम के फिर आ गया, 10 किलोमीटर और आते वक्त कहीं 15 किलोमीटर वापस आया। तो जो 4 है, 4 उसने रोड 2 यूज किया, रोड 1 जाते वक्त और आते वक्त दिस इज सपोज रोड 4। तो उसने टोटल पाथ कितना कवर किया? 10 प्लस 15 किलोमीटर, दैट्स इक्वल टू 25 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पाथ लेंथ कितना हो गया? तो 10 कितना 25, डिस्टेंस हो गया 25 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ये फाइनल पोजीशन भी इसके लिए यही हो गया। For point 4, initial position and final position same, hence displacement is equal to final position minus initial, so that is 0 kilometer. Correct? This is a special case where displacement is 0. If somebody is moving on a circular road path, suppose somebody is walking here, started moving, move किया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, move किया था पोजीशन ए में और एंड भी किया, सर्कुलर पाथ था, एंड भी वही किया, दैट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम। इन दैट केस इसका डिस्टेंस नॉट जीरो, डिस्टेंस नॉट जीरो, कुछ तो भी कवर किया जो भी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। करेक्ट? दैट मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो, whereas displacement can be zero. Yes, distance कुछ तो पाथ कवर करेगा, करेक्ट? whereas displacement can be zero and distance is always positive, always positive, और displacement पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। करेक्ट? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव किया राइट डायरेक्शन, उसने बी तक पहुंचा मान लो 10 किलोमीटर, फिर सी तक पहुंचा 20 किलोमीटर, तो ए से सी गया, ए टू सी जब मूव किया, डिस्टेंस इज सपोज हियर डिस्टेंस एंड सपोज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ए टू सी गया 10 प्लस 20 और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 10 प्लस 20 30, डिस्प्लेसमेंट भी 30 किलोमीटर से। लेकिन जब उसने वापस आ गया यहाँ, दैट मीन ए टू बी ओके, सी तक गया, फिर बी को आ गया, तो कितना गया 10 प्लस 20 फिर 20 आ गया, तो डिस्टेंस हो गया इस केस में 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए टू बी, फाइनल पोजीशन बिकम बी नाउ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ओनली 10 किलोमीटर। राइट? सपोज अनदर केस है, ए टू बी गया, फिर सी गया, फिर बी गया, फिर ए आ गया, तो यहाँ भी आया, तो ये डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। तो उस केस में क्या होगा 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10, दैट्स योर 60 किलोमीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट बिकेम जीरो। सपोज यहाँ ना रुके, कहीं इधर डी आ गया और 20 किलोमीटर, तो ए से बी गया, बी से सी, देन बी, फिर ए, फिर डी, तो उसके लिए पहले यहाँ तो 60 हो ही गया था, फिर 20, 60 प्लस
20, तो ये हो गया 80 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस डायरेक्शन पे, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं और पहुंचा इधर, तो -20 हो गया। मैग्नीट्यूड हो गया 20, लेकिन डायरेक्शन हम जाना था इधर और उधर चला गया। यहाँ से कितना दूरी गया है, 20 किलोमीटर दूरी पीछे की तरफ है, तो -20 किलोमीटर हो गया। तो हेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। अच्छा, इन earlier case we found in all cases you can observe either it is equal to or it is less. Displacement is either equal to or less. Second condition is displacement magnitude either less than distance or equal to distance. Correct? These are the difference between distance and displacement. Okay. In next class we will study the difference between speed and velocity.